Okay, wait a sec. Okay. Hi guys, welcome back to my channel, Happy Blabbers. Wow, what a dry intro. I rather play the song. Okay, I don't know about what to do with the intro thing. Okay, like अभी तक तो मेरे को कुछ पता नहीं है. Let's go with the flow. This is the same content that I'm gonna shoot for the second time because the first time I did, I was having a face mask on my face. So, and today I look really pretty. Why? Because today is Rakhi. Yep. Okay. I'm all dressed up for my brothers, who obviously are gonna be chadde mein. They're gonna be in shorts, and the last thing that they could care about was dressing up, because why would they? Okay. So, coming back to my channel. It's been so long since I've posted a video and I'm not at all consistent, like not at all consistent. What am I doing? I'm studying and I'm like being messed up in my own life. I am messed up. We are teenagers. We are supposed to be messed up. We cannot have our lives sorted. ठीक है? यही तो है मेरी motivation to keep myself going for the plot. We do it for the plot. Okay. So I'm gonna jump straight to the topic. So what are we gonna talk about in this video? We're gonna talk about how to not care. Simple as that. Yes, and it is gonna come from a people pleaser, because I was once a people pleaser. What am I even saying? Okay, I was once a people pleaser. पूरा टाइम मैं यही करती थी. ओ माय गॉड, ये क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा. इनफैक्ट जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी थी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, लोग को कितना क्रिटिसाइज करेंगे. देयर विल बी पीपल जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, यू नो, दे विल बी टॉकिंग बैड अबाउट मी, दिस एंड दैट. करने ही वाले वो लोग बात. एनीवेज, सो व्हाई नॉट जस्ट कुछ टॉपिक दे दूँ उनको बात करने के लिए. कुछ ना करके भी अगर वो बात करने वाले, तो मैं कुछ करके उनको टॉपिक दे दूँ बात करने के लिए, ऑब्वियसली. सो दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू पुट इट इनटू लाइक पॉइंटर्स, राइट? हाउ टू नॉट केयर. यू नो, इवन लाइक वी आर ब्राउन, वी आर इंडियन, तो अपने पेरेंट्स का तो फर्स्ट, यू नो, वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग, एंड यू नो समटाइम्स, नॉट ऑल पेरेंट्स, बट समटाइम्स इवन इन बैक ऑफ द हेड गोज की सुकामा, लाइक I was saying in Gujarati. Okay, so like, अरे तुमको ये क्यों करना है, you know, ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, you know, अरे बिल्डिंग में लोग क्या सोचेंगे, स्कूल में लोग क्या सोचेंगे, कॉलेज में क्या सोचेंगे. Just don't care. I'll tell you, जब मैंने when I started doing makeup, तो पहले it was very shabby, okay, तो मेरे को लगता था यार this is very bad, this and that. But then there was one person who told me कि करना, तू करके सीखेगी ना, once you start doing it, only then you learn it. I'm having a remote, okay. बस स्टार्ट डूइंग तभी तो सीखेगी. एंड यस, slowly even right now I'm learning. Oh my god, it's all messed up because it's so sunny here. I like it when it's sunny in like rainy season. So let's jump straight to the topic. So number one rule of not giving a shit about anyone's opinion is just go deaf. कान बंद कर दो. You know, that's the only like legit rule that actually works. You know, somebody starts speaking, कोई कुछ बोलने की कोशिश करता है, like I say कि you know, I want to do this, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, and people will just start. तुम बस वो अपना ओपिनियन देना चालू कर देंगे. अरे तुमसे पूछा किसने है? मैंने पूछा कि तुमसे कि यार तुम मुझे बताओ कि you know, your opinions don't even matter. ठीक है? Second thing, खुद पे फोकस करो यार गाइज. दिस इज लाइक दी वेरी 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 बेसिक रूल. इट्स लाइक स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. स्टार्ट रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, फिक्शन इफ यू लाइक इट, बट आई एम अ नॉन फिक्शन पर्सन. मैं ज़्यादा फिक्शन नहीं पढ़ती हूँ. आई रीड बुक्स लाइक डीप वर्क, आई रीड बुक्स बेस्ड ऑन फाइनेंस, यू नो, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स कंट्रोल एंड एवरीथिंग, दिस एंड दैट. So I feel कि मैं if I read those books I inculcate something. अगर वो पूरी बुक में अगर 100 पेजेस है और अगर मेरे को 2 पेज भी समझ रहा है,
like there's something going inside my head which is eventually gonna help me. Like that's what I feel. Yep. Number 3, जो हम सब लड़कियां करती है, somewhere we do it even with our best friends, comparing. Stop comparing. चाहे वो marks हो जाए, looks हो जाए, body हो जाए, you know, be it like anything, even the smallest thing, like even if there's like चश्मे का frame, don't compare. किसी पे round glasses look better, किसी पे those cat eyes वाले glasses look actually better. Don't compare कि यार उसके तो मार्क्स इतने हैं, मेरे भी इतने आ सकते थे यार, मैं मतलब इतनी डम हूँ यार. I used to do this. School में when people used to like get like I'll tell you my thing. My best friend, he's very smart, like very smart. So I had this thing school से उसके टाइम से कि यार I want to get like उसके level पे smart, you know, this and that. Like but the thing is he has a knack for numbers and I have a knack for theory. तो वो competition करते करते somewhere I just figured it out कि यार नहीं यार मैं क्यों उसकी स्पेशलिटी में compete करी उसके साथ. Like if he's good with numbers and I'm good with theory, क्या comparison है? We are different in our ways and we are like हम हमारे तरीके से better है. And when we talk about theory, let's not get into that now. But looks, it's okay. You know, body positivity is one thing and looking good is another thing. Like there's बहुत difference, इतना difference है उसमें, ठीक है. Looking good is being presentable. For me, that is being presentable. Looking like pretty decent, clean, neat, maintaining a proper hygiene, right? And even if you like do no makeup, less makeup, a lot of makeup, वो suit होना चाहिए. If you're wearing clothes, doesn't matter what style is going on. People are wearing baggy jeans don't look good on you. मत पहनो. Wear skinny jeans if they look actually good on you. घर पे बैठे हो, you know, when I go down, आजकल के बच्चे, when I actually said बच्चे, I mean it बच्चे, like 13-14 years, they नीचे खेलने आते, they are wearing baggy jeans and crop tops. You know, when I used to go खेलने, I used to wear shorts. चड्डे पहन के जाती थी मैं. And t-shirts, oversized. I used to wear oversized before it was a thing. And they were like freaking old. वो घर के कपड़े जो होते थे जिसमें we all looked homeless, वो होता था. So just wear whatever you want, however you feel comfortable. But the main point is you should feel comfortable. You should feel confident. Wear it. तुमको अच्छे लगे. You know, this dark shade. People are like, अरे अच्छा नहीं लगेगा, this and that. I wore it, right? I'm looking good, okay? It's how you pull off the outfit. It's not the outfit. It's you. It's always you, okay? And the last thing is mental appearance. तुम्हारी सोच कैसी है? How do you think is very important. तुम अगर पूरा टाइम ये सोचते रहोगे ना कि ओ माय गॉड ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है, मत just you know, इत्तू सा से दिखता है, इत्तू सा, like this small guys, this small, and तुम उसमें तो I cannot even show it on my hands, इतने छोटे दिखने वाले हो, like boyish ones, अगर you know if your picture is taken or something. Nobody cares. You are gonna be once. मतलब मेरा ये था, हेती देसाई is born only once. तू एक ही बार पैदा हुई है. Okay, keeping the multiple universe theory aside. तो एक ही बार पैदा हुई है. Okay, you're only once. हेती Mayank Desai is gonna be only once. And you're gonna be whoever you are only once. Oh my god. You're gonna be you only once. So why not get the best version of yourself out? Why to restrict yourself? Why to stop yourself? ये करना है वो भी करो, ये करना है वो भी करो. दुनिया का सोचे भाड़ में जाओ. Nobody cares, okay? Nobody cares. 5 मिनट तक बात करेंगे. 6th minute they'll forget about you, and they're talking about you. They don't even know what your favorite color is. So just like don't care about it. They don't even know what your surname is. So you know they might be like, even if it's in college, right? तुम चल रहे हो, people will look at you, oh my god, she's wearing too revealing clothes.
You go into the washroom, you come back. They're not standing there. They're talking about some other person. नहीं, उनको कोई फर्क नहीं, उनका काम ही ये है, करने दो बात. Just let them talk. You know, और अगर you know at some point you're like कि नहीं लिया जा रहा, you know कि start playing music. I do this a lot. मेरे को लगता है ना कि oh my god, I'm not feeling confident. You know, people might be judging me. You know what I'm doing or whatever this is. I start playing music. Be in your own zone. Being delulu is the only salulu. Trust me. Delusion में रहो. Fake it until you make it. Trust me. This is like the last thing. And I won't say कि लोगों के opinions के बारे में फिक्र मत करो. Do it. But उन्हीं के ओपिनियंस मैटर करने से तुम्हारे लाइफ में जो जेन्युइनली तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि भाई तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ो, तुम जिंदगी में कुछ करो, यू बी अ गुड पर्सन, यू बी अ बेटर पर्सन. एंड वो बहुत कम लोग होंगे लाइफ में. यू नो, यू से आई हैव अ होल फ्रेंड्स ग्रुप एंड एवरीथिंग. गुड, कीप योर फ्रेंड्स ग्रुप, हैंग आउट विद देम, चिल विद देम, रिलैक्स करो, म्यूजिक जैमिंग सेशन, गो ऑन ड्राइव्स, दिस एंड दैट. बट you should have a person to yourself, or like people who actually care about you, who actually look out for you. And it's not necessary it has to be either your boyfriend or your girlfriend. It can be your best friend, it can be your mom, it can be your dad, anyone. For me, it's my mom, dad and my best friend. I am stuck somewhere, I am in trouble, I need advice, I go completely raw in front of them. They know कि मैं कौन क्या हूँ, where am I faking it, and I do care about their opinions. मैं लोग कोई बाहर का के मुझे कुछ बोलेगा क्या, 2 मिनट तो सबके दिमाग में रहेगा कि यार what did he say or what did she say to me, you know, why did she say that. 2 minutes max. You know this thing, अगर कोई चीज़ तुम्हें आने वाले 5 साल में अफेक्ट नहीं कर रही है तो 5 मिनट से ज़्यादा ना उसके बारे में मत सोचो. Like if that thing is gonna affect me for 5 years further, then I think about it for more than 5 minutes. Otherwise भाड़ में जाए तुम्हारे opinions. Just go to hell. just leave my life. Your opinions don't matter to me. Zero. They don't matter. Trust me. Yes. And God, nice. Now I sneeze on my YouTube. Okay, wait a second. And sorry for the sneeze. Start speaking and thinking what you are. You know, जब तुम एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे ना, तुम वैसे बनते जाओगे. तुम बोलोगे अरे यार मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, आई एम नॉट दिस गुड, तो तुमको खुद ही लगेगा इन द बैक ऑफ योर माइंड कि तुम वैसे ही हो. यू नो, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी कि नहीं यार मैं तो ऐसी हूँ यार, आई एम तो दिस, आई एम तो दैट, मैं फलाना, मैं इंट्रोवर्ट, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ यार, मेरे से तो ये नहीं होता, वो नहीं होता. चल, स्टॉप इट. Start saying positive affirmations. I am smart, I am pretty, I am, भाई मैं स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हूँ, like जेठालाल says it. Yes. Don't settle. कोई तुम्हें तारीफ नहीं करा, खुद की करो. Look into the mirror and just go like, oh God, I'm looking pretty. It's that simple. It's that simple. चल के जाओ, you can walk, चल के जाओ, शीशे के सामने खड़े हो, talk to yourself, I'm pretty, turn on your camera, oh my God, I'm looking so good. It's that easy. Why are you depending on others to just give you compliments? I mean, वो खुद को भी नहीं देते होंगे compliments, तुम्हें क्या देंगे? So just self-help, you know? But that is it. Very basic things जो यूजुअली तुमने कहीं और भी सुनी होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें बोलते होंगे, बट उनकी तो सुनता कौन है. हमें तो जो फ्रेंड्स बोलेंगे उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है. मैं भी वही करती हूँ. ओके. फिर वो रायता स्प्रेडिंग, फिर रायता बटोरिंग. रायता फैल जाता है, रायते को बटोरना होता है. आधी जिंदगी तो उसी में निकल रही है मेरी. बट स्टिल इट्स जस्ट यू, एंड इट्स ओनली गोना बी यू who's gonna help yourself, who's gonna be for you. Your parents are going to leave you after some time. Like, you'll move out for studies or you'll go out somewhere. You have to stay away from them. Certain time तक हर चीज में तो parents पे dependent नहीं रह सकोगे. Your best friends or other people, you know, your person will also be having their shit together.
like shit together going on, like right, exactly. They'll be having their stuff, they'll be having their own problems, जो तुम्हें भी कई बार सुनने पड़ेंगे यार. इतने भी फिर सेल्फ ऑब्सेस मत हो जाना कि भाई उनकी प्रॉब्लम्स तुम सुन रहे हो, इधर से जाके इधर से निकल रही है. ब्रो, then they're gonna eventually leave you, because then you'll be turning into a self-obsessed person, and you don't have to be self-obsessed. You just have to be self-focused. Just two different things. Exactly. So just focus on yourself. Don't care about what people think. Just don't care about what they think. Just, you know, there's this we all have seen Jab We Met, and Geet is like, आपका हो गया और भाषण दे गया whatever, कि मैं कि आप नहीं, what was it या याद आ गया. आप जो ये ज्ञान देते हैं, ये फ्री में देते हैं कि इसके पैसे चार्ज करते हैं? नहीं, ये तो मैं फ्री में देता हूँ, क्योंकि छुट्टे नहीं है मेरे पास. ट्रस्ट मी विद दिस. लोगों को मुफ्त का सिर्फ ज्ञान देना आता है. लेट देम गिव इट. जो अच्छा लगे वो सुनो, जो नहीं लगे वो throw it away. Throw them away, throw their mentality away. Don't let their toxic mentality get on your head, inside your brain. वैसे भी हमारे पास 2 ब्रेन सेल बची है फंक्शन करने के लिए. उसको बचा के रखो. एक चीज को इमोशनल क्वेश्चन के लिए यूज करो, एक चीज को IQ. यू नो, जस्ट डिवाइड योर 2 ब्रेन सेल्स इक्वली एंड यूज देम. गर्ल्स, यूज योर ब्रेन्स. Use it. So that is it for today. And like I've spoken a lot. I don't know why. I just start the camera and start speaking. कभी तो flow भी नहीं होता है मेरा, you know. But then again, what matters is content. The content is not that good as well, okay? But I feel it's to the point. ऐसे नहीं जा रहा था content, आज ऐसे जा रहा था. So I'm proud of myself for not going and going, right? So that is it for today. Like and subscribe to my channel. Why am I even saying that? Am I what, a blogger? But okay. If you like it, just comment it. And yep, I'll be back with new lessons that I learned in a different way, in a hard way, telling it to you so that तुम थोड़े precautions ले लो. मेरे साथ बीत गई, तुम precautions ले लो. फिर अगर तुम नहीं ले रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, साथ में दुखी होंगे. यस, बट स्टे हैप्पी, स्टे सेल्फ फोकस्ड एंड स्टे इन डेलुलु, बिकॉज अगेन इट्स द ओनली सोल्यूशन.